So that's Pullman Hotel in downtown, which is going to be our home for the next few days. और इसका location इतना perfect है because right opposite is the Burj Khalifa. Alright, so we are heading for the breakfast, and breakfast is the place where you wasoolify all the expenses of the hotel. Breakfast कर लिया है, and now we are heading to Museum of the Future, which is one of the most hyped tourist attractions right now in Dubai. We are now standing at Mohammed bin Rashid Spaceport, and from here we will launch our space shuttle. Journey begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. So we have entered this weird spaceship, and we call it a spaceship. So guys, this is a NASA approved space station replica, and they've tried to create the exact replica of how it would be to experience being in a space station, and this is incredible. Like, what fantastic use of technology, just amazing. Okay, so this is a moment that we were waiting for, and you would have already seen this in pictures of a lot of people. Here we go.
we're in the center of this building and इन्होंने जानबूझ के इसकी access को थोड़ा सा non-touristy बना रखा है, so you can't really just go as a guided tour. So पूछ पाछ के इधर उधर से we've come right in this middle of this building and it's incredible. It's just incredible. आर्किटेक्चर बड़ा स्पेशल है बिकॉज पूरी बिल्डिंग में कोई भी कॉर्नर नहीं है. इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर, तो व्हाइल यू आर रोमिंग इनसाइड इवन इफ यू ट्राई टू फाइंड अ कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं है बिकॉज द होल स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेक्स इट वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल. एंड द सेकेंड स्पेशल थिंग अबाउट दिस बिल्डिंग इज दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग दैट हैज़ अ लैंग्वेज रिटन ऑल ओवर इट, द इंटायर स्ट्रक्चर. सो ओवरऑल आई थिंक अ मस्ट विजिट बिकॉज डिफरेंट है, नया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स इनसाइड, कि क्या फ्यूचर डिपेक्टेड है, क्या ऑपरेटर्स है अंदर, क्या इंजीनियरिंग है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दैट इट हैज़. सो वन मोर सजेशन इज़ कि अगर आप 11:30-12 बजे मतलब मॉर्निंग के स्लॉट में आ जाओ तो बेटर है, अदरवाइज़ ऐसी भीड़ मिलेगी. हम सुबह में आ गए थे, हमारा टूर हो चुका है, बट अब बहुत गंदी भीड़ है और यहाँ पे एक घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है. सो सजेशन इज़ दैट यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग. आ जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो खड़े हो जाओ. आइसक्रीम भी बिकती है, आइसक्रीम खा लेना लाइन में लग के, अपनी मर्जी.